Very good morning. Good morning. थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट। जी। चलो स्टार्ट करते हैं ना। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पढ़ो पहला। जी जी जी। सूत उवाच इति भीतः प्रजा दोहात दोहात सर्वधर्म विवित्स्या ततो विनिशनं प्रागात यत्र देव व्रतो अपतत। Translation. Suta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaja Yudhishthir went to the scene of the massacre. There, Bhismdev was lying on a bed of arrows about to pass away. Purport. In this ninth chapter, as it is willed by Lord Sri Krishna, Bhishmdev will impart instructions to King Yudhishthir on the subject of occupational duties. Bhishmadeva will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishmadeva was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all contemporary elites, and all of them assembled there to show their feeling of love, respect, and affection for the great soul. जीजा जी, इसमें एक चीज हमको बस नहीं समझ आई कि इन्होंने कहा कि भीष्म देव वॉज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ लिविंग हिज मटेरियल बॉडी एट विल। इसका क्या मतलब हुआ? उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, मतलब ही कुड he had the power to leave his body, and I mean in the exact word that he had the power to die at his own time of choosing. अच्छा। हम्म। अब वो उसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, बट he had got this kind of मतलब he was a very great person from the childhood. You see, so that is why क्या नाम है, वो बड़ी लंबी कहानी है, जी। बट आई थिंक क्या नाम है, आई डोंट रिमेम्बर कि हाउ ही गॉट दिस वरदान ऑफ इच्छा मृत्यु, मतलब ही कुड नॉट आई बी थिंक किल्ड, उनके दैट इज व्हाई फादर ही से, कुड। हाँ, ये उनके फादर से मिला था। भीष्म पितामह को ना अपने तो फादर से उनसे मिला क्या था। नाम है, मतलब वो जो उनको यहाँ हाँ, उन्होंने अच्छा। वो लिया था ना कि एक्चुअली वो एक तो उन्होंने शादी नहीं कर, मतलब ही हैड हाँ वो सारा एक्सेप्टेड कि मुझे वो पता शादी है, नहीं लेकिन करेंगे। अच्छा, हाँ दो दो उन्होंने, हाँ दूसरा फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं मतलब बच्चे भी नहीं करूंगा, मैं बच्चे भी नहीं करूंगा। हाँ क्योंकि हाँ पहले में कहा था उन्होंने कि मैं शादी नहीं करूंगा, फिर उससे एक वरदान मिला था, फिर दूसरे में उन्होंने कहा कि भाई मैं बच्चे भी नहीं करूंगा। उससे फिर इनको ये वरदान मिला कि इच्छा मृत्यु, क्योंकि उन्होंने अपनी हाँ। इच्छाओं पे बिल्कुल जीत पा ली थी। अच्छा।
यहाँ पे मेरे ख्याल में उनकी ग्रेटनेस को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रभुपाद जी। जी जी क्या जी नाम है कि जी। भाई ही वॉज, एंड एक चीज और भी बता रहे हैं कि भाई अपने क्या नाम है कि डेथ बेड पे ही वॉज एबल टू प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड हम्म। एंड लीव फॉर द फॉर द जी। भगवान कृष्ण के लोक में पहुंच गए। हम्म। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी। तदा ते भ्रातरः सर्वे सद्श्रैवे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विपा व्यास धौम्यादस्यथा। At that time, all his brothers, followed by him on beautiful chariots drawn by first-class horses, decorated with gold ornaments, with them were Vyasa and Rishi like Dhaumya, the learned priests of Pandavas and others. हम्म। हम्म तो ये बता रहे हैं कि हम है यहाँ जी पर जी। कि मतलब सारे लोग जो है रथों पे सवार होके हम्म। गए गए उनकी तरफ, उनके पीछे पीछे उनके ये बड़े बड़े ऋषि गण भी जी। गए। हम्म। चलो भाई नेक्स्ट वरुण तुम पढ़ो थर्ड। टेक्स्ट 3। हम्म भगवान अपि विप्रार्षे रथेन साधनञ्जय सातैर्व्यारोचता नृपा कुबेरा इव गुह्यकाय। Translation. O sage among the Brahmanas, Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, also followed, seated on a chariot with Arjun. Thus King Yudhishthir appeared very aristocratic, like Kubera, surrounded by his companions, the Guhyakas. Purport. Lord Sri Krishna wanted the Pandavas to be present before Bhishmdev in the most aristocratic order, so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. Kubera is the richest of all demigods, and herein King Yudhishthir appeared like him, Kubera, for the procession along with Sri Krishna was quite appropriate to the royalty of King Yudhishthir. मेरे तो दिमाग में बार बार यही जाता है कि यू सी द लॉर्ड ही इज बिकॉज भीष्मदेव जो हैं वो थे डिवोटी थे, ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कितना लॉर्ड अभी ही इज ऑन ए बेड ऑफ एरोज हम्म। एंड उनके सारे सब मर भी गए हैं। भगवान कितना ख्याल रख रहे हैं कि भाई उनको एक तो पांडवों से बड़ा प्रेम भी था, तो टू शो पांडव इन ए एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर, एंड देन ही वांटेड कि भाई सब लोग जो हैं अपने ओबीसेंसेस पे करें भीष्म देव को। तो हम्म। बार बार मेरे दिमाग में वही जाता है जो भगवान ने अर्जुन से कहा ना कि माई डिवोटी गो बोल्डली डिक्लेयर दैट माई डिवोटी शैल नेवर पेरिश। हम्म। तो ये मेरे को लॉर्ड ने करके भी वो तो है ही है, खैर लॉर्ड तो। आगे पढ़ो। जी। हम्म दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्येषु तम दिव्येषु तमिवावरम् प्रणिमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा। Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandavas, King Yudhishthir, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaja Yudhishthir as well as the intimate friend of Arjuna. But all the family members of the Pandavas knew Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. The Lord, although conscious of his supreme position, always behaved in a humanly custom, and so he also bowed down before the dying Bhishmdeva as if he were one of the younger brothers of King Yudhishthir. लॉर्ड जो प्रभुपाद है जी। ना अल्टीमेट जेंटलमैन है, बिल्कुल Hmm. लॉर्ड कृष्णा अल्टीमेट जेंटलमैन है। कोई उनको पता है कि ही इज द सुप्रीम, आई मीन ही उनको पता है, पांडवों को भी पता है ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, बट वो एटिकेट्स बिल्कुल मतलब Hmm. पक्के फॉलो करते हैं। बिल्कुल। भाई क्रम है प्रभुपाद जी यहाँ परपोर्ट में भी बता रहे हैं, और भगवान का ये पूरा
हर समय, जैसे भगवत गीता में भी कहा है ना कि जो जो बड़े लोग करेंगे वो मतलब उनके वो सब लोग फॉलो करेंगे, छोटे लोग। हम्म, तो वो ये हमेशा कहीं पर भी ऐसा नहीं होने देते हैं कि ताकि क्या नाम है प्रजा जो है वो गलत संदेश उनमें जाए। तो उनके अंदर में मतलब वो बिल्कुल ही अहंकार रहित और जो आइडियल बिहेवियर है ऑफ हिज ओन पोजीशन व्हाइल ही इज डूइंग दिस लीला, दैट ही shows all the time without a single failure. Text 5. हम्म, तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देव वर्षस्य सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टम भरत पुंगवम, just to see the chief of the descendants of King Bharat, Bhishma, all the great souls in the universe, namely the rishis among the demigods, Brahmanas and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. Purport. The rishis are those who have attained perfection by spiritual achievements. Such spiritual achievements can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. Bhishmdev himself was also one of the Brahma rishis and the chief of the descendants of King Bharat. All rishis are situated in the quality of goodness. All of them assembled there on hearing the news of the great warrior's impending death. हम्म, मतलब ये कई जगह और भी आएगा, बट क्या नाम है यहाँ पर बड़ा कि उनके डेथ के टाइम पे ये सारे ऋषि और बड़े बड़े लोग जो है आकर के इकट्ठा हुए हैं कि भाई जी, एक एक महान आत्मा जो है अब ही इज अबाउट टू डिपार्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड, हम्म, so they want to pay obeisances at the same time, learn something from him. What is हम्म, he going to say? Or if Lord Shri Krishna himself is there, so there is जी, no question of not going there. हम्म, एक चीज और भी है, मतलब कि ना, मतलब कैसे, एक चीज और मेरे दिमाग में जाती है कि मतलब भीष्म देव जो हैं वो इतने एग्जॉल्टेड थे कि मतलब सब लोग उनसे मिलने गए, लॉर्ड अरेंज्ड फॉर इट कि सब लोग उनसे मिलें और सीखें उनसे कुछ, राइट। हम्म, मतलब एटलीस्ट उस समय में, मतलब अभी भी आजकल में, मतलब लोगों का विजडम अभी भी है, मतलब जो ओल्डर जनरेशन है, लेकिन लोग उनसे मतलब ओल्ड एज में कुछ मिलना नहीं चाहते, ऐसा लगता है। मतलब जैसे कि ना अभी, जैसे इवन इस्कॉन वगैरह में भी जो ओल्डर डिवोटीज हैं वो बेचारे, मतलब पीपल वांट टू, बट इतना उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से कि मतलब जाके उनसे सीखें, उनसे लर्न करें कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ काटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे एग्जीक्यूट करी। तो आई फील कि मतलब बड़ा ये, दिस इज समथिंग टू बी लर्न, कि मतलब स्पेशली जो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो इस्कॉन वगैरह के ओल्डर डिवोटीज हैं, लॉट टू बी लर्न फ्रॉम देम कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ काटी। हम्म, जी, हाँ, वही वाला मतलब भगवान जो है ना एक आदर्श एक आइडियल बिहेवियर स्टेब्लिश करते हैं हर ओकेजन पे। से हम्म, यहाँ पर भी वो उन्होंने जानबूझ करके क्या नाम है युधिष्ठिर को बिल्डर कर दिया ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा हो और सारे लोग वहां पर जाएं। हम्म, और एक एक आइडियल बिहेवियर उन्होंने अगेन ही हैज एस्टेब्लिश्ड। और बिल्कुल वरुण ने सही कहा कि भाई देयर इज ए लॉट टू बी लर्न फ्रॉम ओल्डर डिवोटीज, और ओल्डर डिवोटीज को भी कोई ऐसा वो नहीं छोड़ना चाहिए जो कि क्या नाम है मतलब जो जो लोग ओल्डर का मतलब यहाँ पे नहीं, भगवान कृष्ण तो ओल्डर मतलब उस सेंस में नहीं थे, बट कि भाई जो लोग लीडर्स हैं उनको, जो एग्जॉल्टेड लोग हैं उनको उनकी तरफ उनको बारे में बताना चाहिए। उनके जैसे यहाँ पे हम्म। भगवान तो लेके ही गए सबको वहां हम्म। तक कि भाई उनसे युधिष्ठिर से अरे उनसे भीष्म देव से सीखो। हम्म, जी,
जैसे उस कंटेक्स्ट में, जैसे मैं वही थोड़ा सा अभी आज मेरे से मुक्ता प्रभु भी शेयर कर रहे थे, तो आई शेयर विद यू आल्सो। अभी सत्वस्वरूप महाराज जो थे, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल। सत्वस्वरूप महाराज जो हैं, वो श्रीला प्रभुपाद के वन ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल थे। 60s की बात है ये। एंड लाइफ लॉन्ग वो रहे डिवोटी। उन्होंने तो इनिशियली ही गेव लाइक ऑल हिज इनकम ऑल्सो ही वुड कंट्रीब्यूट। तो अब वो अपने ओल्ड एज में आ गए हैं। तो पापा को और हमको तो खैर काफी, हम उनको फॉलो भी करते रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, तो उनकी एज काफी हो गई है। एंड यू सी, अभी वो निमोनिया, अभी अभी वो हॉस्पिटलाइज थे, निमोनिया में हुआ हुआ था, फिर देन ही इज बैक। पर जिस ग्रेस से वो कर रहे हैं, मतलब हम्म आध्यात्मिक प्रॉब्लम को, अपनी बॉडी और माइंड के प्रॉब्लम को, इट इज समथिंग टू बी लर्न। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। हम्म तो 6 7। हाँ। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहदाश्वो भरद्वाज साशिष साशिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इन्द्र परामादस् त्रितो गृत्सामदो स्थिता कक्षिवन् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथा सुदर्शना। All the sages like Parvat Muni, Narad, Dhaumya, Vyas, the incarnation of God, Brihadashva, Bharadwaj, and Parashuram, and the disciples Vashishta, Indra, Indra Paramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika, and Sudarshana were present. इसमें आई थिंक ये लॉर्ड परशुराम तो आई थिंक इनके स्पिरिचुअल मास्टर ही हो गए शायद। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, भीष्मदेव की तो स्पिरिचुअल मास्टर भी यही परशुराम जी ही थे, जहाँ तक मुझे हाँ, याद फिर है। बाद में इन दोनों जनों में एक बार लड़ाई भी हुई है, लड़ाई भी युद्ध हुई हुआ है। है। यस, अंबिका के वो सिलसिले में, हम्म। या हम्म। अंबालिका। पर हम्म। Parvat Muni is considered to be one of the oldest sages. He is almost always a constant companion of Narad Muni. They are also spacemen competent to travel in the air without the help of any material vehicle. Parvat Muni is also a Devarishi or a great sage among the demigods like Narad. He was present along with Narad at the sacrificial ceremony of Maharaj Janamejaya, son of Maharaj Parikshit. In this sacrifice, all the snakes of the world were to be killed. Parvat Muni and Narad Muni are called Gandharvas also because they can travel in the air singing the glories of the Lord. Since they can travel in the air, they observe Draupadi's Swayamvar ceremony, selecting of her own husband from the air. Like Narad Muni, Parvat Muni also used to visit the royal assembly in the heaven of King Indra. As a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the important demigods. Both Narad and Parvata were once in trouble with the daughter of Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya got the benediction of a son by Parvat Muni. Narad Muni is inevitably associated with the narrations of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maidservant, but by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service, and in the next life, he became a perfect man, comparable with himself only. In the Mahabharata, his name is mentioned in many places. He is the principal Devarashi or the chief sage among the demigods. He is the son and disciple of Brahmaji, and from him the disciplic succession in the line of Brahma has been spread. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and many celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasdev, the author of the Vedic literatures, and from Vyasdev, Madhavacharya was initiated, and thus the Madhava Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya is also included, has spread all over the universe. Sri Chaitanya Mahaprabhu belonged to this Madhava Sampradaya. Therefore, Brahmaji, Narad, Vyas, down to Madhava, Chaitanya, and the Goswamis all belong to the same line of disciplic succession. Naraji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam, we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother, and he instructed Vyasdev, father of
Vasudev, sorry, he instructed Vasudev, father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthir. Dhaumya, a great sage who practiced severe penances at Utkochaka Tirtha and was appointed royal priest of the Pandav kings. He acted as the priest in many religious functions of the Pandavas, Samskar, and also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. He instructed them how to live incognito for 1 year, and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. His name is mentioned also when the general funeral ceremony was performed after the Battle of Kurukshetra. In the Anushasan Parv of Mahabharata 127, 15 to 16, he gave very elaborate religious instructions to Maharaj Yudhishthir. He was actually the right type of priest of a householder, for he could guide the Pandavas on the right path of religion. A priest is meant for guiding the householder progressively in the right path of ashram dharma or the occupational duty of a particular caste. There is practically no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints, and Brahmins were especially meant for such functions. Badararayan Vyasdev, Badarayana Vyasdev. He is known as Krishna Dvaipayan Satyavati Sutta, Parasharya, Parasharatmaja, Badarayana, Vedavyas, etc. He was the son of Mahamuni Parashara in the womb of Satyavati prior to her betrothal with Maharaj Shantanu, the father of the great general grandfather Bhishmdev. He is a powerful incarnation of Narayan and he broadcasts the Vedic wisdom to the world. As such, Vyasdev is offered respects before one chants the Vedic literature, especially the Puranas. Sukhdev Goswami was his son, and rishis like Vaishyampayan were his disciples for different branches of the Vedas. He is the author of the great epic Mahabharata, the great transcendental literature Bhagwatam. The Brahma Sutra, the Vedanta Sutra, or Badarayana Sutra were compiled by him. Among sages, he is most respected author by dint of severe penances. When he wanted to record the great epic Mahabharata for the welfare of all people in the age of Kali, he was feeling the necessity of a powerful writer who could take up his dictation. By the order of Brahmaji, Sri Ganeshji took up the charge of noting down the dictation on the condition that Vyasdev would not stop dictation for a moment. The Mahabharata was thus compiled by the joint endeavor of Vyas and Ganesh. By the order of his mother Satyavati, who was later married to Maharaj Shantanu, and by the request of Bhishmdev, the eldest son of Maharaj Shantanu by his first wife, the Ganges, he begot three brilliant sons, whose names are Dhritarashtra, Pandu, and Vidur. The Mahabharata was compiled by Vyasdev after the battle of Kurukshetra and after the death of all the heroes of Mahabharata. It was first spoken in the royal assembly of Maharaj Janamejaya, the son of Maharaj Parikshit. Brihadashva, an ancient sage who used to meet Maharaj Yudhishthir now and then. First of all, he met Maharaj Yudhishthir at Kamyavan. This sage narrated the history of Maharaj Nal. There is another Brihadashva who is the son of the Ishwaku dynasty. Mahabharat Vanaparv 209 4 to 5. Bharadwaj. He is one of the seven great rishis and was present at the time of birth ceremony of Arjun. The powerful rishi sometimes undertook severe penances on the shore of the Ganges, and his ashram is still celebrated as Prayagdham. It is learned that this rishi, while taking bath in the Ganges, happened to meet Ghritachi, one of the beautiful society girls of heaven, and thus he discharged semen which was kept and preserved in an earthen pot, and from which Drona was born. So Dronacharya is the son of Bharadwaj Muni. Others say that Bharadwaj, the father of Drona, is a different person from Maharishi Bharadwaj.
She was a great devotee of Brahma. Once she approached Dronacharya and requested him to stop the battle of Kurukshetra. Parashuram or Renuka Shuta. He is the son of Maharishi Jamadagini and Srimati Renuka. Thus, he is also known as Renuka Sutta. He is one of the powerful incarnations of God and he killed the Kshatriya community as a whole 21 times. With the blood of the Kshatriyas, he pleased the souls of his forefathers. Later on, he underwent severe penances at the Mahendra Parvat. After taking the whole earth from the Kshatriyas, he gave it in charity to Kashyap Muni. Parashuram instructed the Dhanur Veda or the science of fighting to Dronacharya because he happened to be a Brahman. He was present during the coronation of Maharaj Yudhishthir and he celebrated the function along with the great other rishis. Parashuram is so old that he met both Ram and Krishna at different times. He fought with Ram, but he accepted Krishna as the supreme personality of Godhead. He also praised Arjun when he saw him with Krishna. When Bhishma refused to marry Amba, who wanted him to become her husband, Amba met Parashuram and by her request only he asked Bhishmdev to accept her as his wife. Bhishma refused to obey his order, although he was one of the spiritual masters of Bhishmdev. Parashuram fought with Bhishmdev when Bhishma neglected his warnings. Both of them fought very severely, and at last Parashuram was pleased with Bhishma and gave him the benediction of becoming the greatest fighter in the world. Vasishtha, the great celebrated sage among the Brahmins, well known as Brahma Rishi Vasishtha Dev. He is prominent figure in both the Ramayana and Mahabharata periods. He celebrated the coronation ceremony of the personality of Godhead Sri Ram. He was present also on the battlefield of Kurukshetra. He could approach all the higher and lower planets, and his name is also connected with the history of Hiranyakashipu. There was a great tension between him and Vishwamitra, who wanted his Kamadhenu wish-fulfilling cow. Vasishtha Muni refused to spare his Kamadhenu, and for this Vishwamitra killed his 100 sons. As a perfect Brahman, he tolerated all the taunts of Vishwamitra. Once he tried to commit suicide on account of Vishwamitra's torture, but all his attempts were unsuccessful. He jumped from a hill, but the stones on which he fell became a sack of cotton, and thus he was saved. He jumped into the ocean, but the waves washed him ashore. He jumped into the river, but the river also washed him ashore. Thus, all his suicide attempts were unsuccessful. He is also one of the seven rishis and husband of Arundhati, the famous star. Indra Pamada, another celebrated rishi, Trita, one of the three sons of Prajapati Gautam. He was the third son, and his other two brothers were known as Ekat and Yuta. All the brothers were great sages and strict followers of the principles of religion. By dint of severe penances, they were promoted to Brahmalok, the planet where Brahmaji lives. Once Trita Muni fell into a well. He was an organizing worker of many sacrifices, and as one of the great sages, he also came to show respect to Bhishma ji at his bed. He was one of the seven sages in the Varuna Lok. He hailed from the western countries of the world. As such, most probably he belonged to the European countries. At that time, the whole world was under one Vedic culture. Mada, one of the sages of the heavenly kingdom. He was a close friend of Indra, the king of heaven, and was as great as Brihaspati. He used to visit the royal assembly at of Maharaj Yudhishthir, and he also visited the place where Bhishmdeva breathed his last. Sometimes he explained the glories of Lord Shiva before Maharaj Yudhishthir. He was the son of Vita Havya, and he resembled in features the body of Indra. Sometimes the enemies of Indra mistook him to be Indra and arrested him. He was a great scholar of the Rig Veda, and thus he was highly respected by the Brahman community. He lived a life of celibacy and was powerful in every respect. Asita. There was a king of the same name, but here in the Asita mentioned is the Asita Devala Rishi, a great powerful sage of the time. He explained to his father 1.5 million verses from the Mahabharata. He was one of the members of the snake sacrifice of Maharaj Janamajaya.
He was also present during the coronation ceremony of Maharaj Yudhishthir, along with other great. He also gave Maharaj Yudhishthir instructions while he was on the Anjana hill. He was also one of the devotees of Lord Shiva. Kakshivan, one of the sons of Gautam Muni and the father of the great sage Chanda Kaushika. He was one of the members of the parliament of Maharaj Yudhishthir. Atri. Atri Muni was a great sage and was one of the mental sons of Brahmaji. Brahmaji is so powerful that simply by thinking of sun he can have it. These sons are known as Manasa Putras. Out of the seven Manasa Putras of Brahmaji and out of the seven great Brahman sages, Atri was one. In his family, the great Prachetas were also born. Atri Muni had two Kshatriya sons who became kings. King Thama is one of them. He is counted as one of the 21 Prajapatis. His wife's name was Anasuya, and he helped Maharaj Parikshit in his great sacrifices. Kaushika, one of the permanent Rishi members in the royal assembly of Maharaj Yudhishthir, he sometimes met Lord Krishna. There are several other sages of the same name. Sudarshana, the wheel which is accepted by the personality of Godhead, Vishnu or Krishna as his personal weapon, is the most powerful weapon, greater than the Brahmastra or similar other disastrous weapons. In some of the Vedic literature, it is said that Agni Dev, the fire god, presented this weapon to Lord Sri Krishna, but factually this weapon is eternally carried by the Lord. Agni Dev presented this weapon to Krishna in the same way that Rukmini was given by Maharaj Rukma to the Lord. The Lord accepts such presentations from his devotees, even though such presentations are eternally his property. There is an elaborate description of this weapon in the Adi Parv of the Mahabharata. Lord Sri Krishna used this weapon to kill Shishupal, a rival of the Lord. He also killed Shalva by this weapon, and sometimes he wanted his friend Arjun to use it to kill his enemies. Mahabharata, Virat Parv 56:3. सबके बारे में बता दिया श्रीला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सभी को बारे में बताया, probably because he thought कि English knowing word को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे, क्या नाम है, ये कितने exalted ऋषि हैं जो कि आए हैं इनके डेथ बेड पे to pay their obeisances to such a great person. कोई राइवलरी नहीं है, मतलब दे आर ऑल, आई मीन यू कैन ऑलमोस्ट फील कि दे वर ऑल वेरी वेरी एग्जॉल्टेड एंड मतलब कि एक दूसरे को, मतलब महाराज युधिष्ठिर पांडवों को भी हेल्प करते रहे हैं, या फिर कुछ ने लॉर्ड राम के टाइम में भी थे, लॉर्ड कृष्णा के टाइम में भी थे, डिफरेंट डिफरेंट पेनेंसेस किए हैं, बड़ा इंटेंस, मतलब वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। इंडिया सही में बड़ा ब्लेस्ड कंट्री था भी और है भी। अगर ये सब पढ़े, इट इज रियली ग्लोरियस। मतलब हम लोगों की हिस्ट्री जो है, हम लोगों की क्या, एक्चुअली तो ये तो ह्यूमन काइंड की हो गई, लेकिन भारतवर्ष की जो हिस्ट्री है रियली बहुत ही ग्लोरियस है। और ये तो वेरी वेल नोन है। मैं तो और भी सुनता हूँ कि मतलब जो डिवोटीज की जो हिस्ट्री है, इवन लास्ट 1000 years की, जो बिल्कुल ही लॉस्ट हो गई है, वो भी बहुत ग्लोरियस है। कैसे कैसे उन लोगों ने चीजें बचाई हैं फ्रॉम द इन्वेडर्स, आर्च विग्रहों को कैसे कैसे बचाया है, कैसी कैसी चीजें उनकी स्टोरीज हैं। तो लेकिन बट ये बहुत ही मतलब बड़ा इंटेंसली पायस लोग, इंटेंसली पायस। तभी आप लॉर्ड के टाइम में, युग में जन्म ले सकते हो, इतने पायस थे। चले आगे पढ़े क्रम है जी जी। टेक्स्ट 8 जी। अन्य च मुनियो ब्राह्मण ब्रह्म रातादयो अमला, यही है ना जी? हाँ बिल्कुल यही है जी। शिष्य रूपेता आजन मुह कश्यपी अपिंगर सादया।
Translation. As many others like Sukdeva Goswami and other purified souls, Kashyap and uh, Angirsa and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. Purport. Sukdev Goswami, the famous son and disciple of Sri Vyasdev, who taught him first the Mahabharata and then Srimad Bhagwatam. Sukdeva Goswami recited कितना है डिजिट वरुण जरा डिजिट बताओ 14 लाख 14 लाख या फिर 1.4 1.4 million million, yes. या फिर 14 लाख 1.4 verses of the Mahabharata in the councils of the Gandharvas, Yaksh and Rakshasas, and he recited Srimad Bhagwatam for the first time in the presence of Maharaja Parikshit. He thoroughly studied all the Vedic literature from his great father. Thus, he was a completely purified soul by dint of his extensive knowledge in the principles of religion. From Mahabharata Sabha Parv, it is understood that he was also present in the royal assembly of Maharaja Yudhishthir and at the fasting of Maharaja Parikshit. As a bona fide disciple of Sri Vasudeva, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values. And his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom, the difference between the fruitive work and empiric knowledge, the ways and means of attaining spiritual realization, the four ashramas, namely the student life, the household life, the retired life, and the renounced life. Mm, the sublime position of the Supreme Personality of Godhead, the process of seeing Him face to face, and the bona fide candidate for receiving knowledge, the consideration of five elements, the unique position of intelligence, the consciousness of the material nature and the living entity, the symptoms of the self-realized soul, the working principles of the material body, and the symptoms of the influential modes of nature, the tree of perpetual desire, and the psychic activities. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father and Naradji. Descriptions of his travel in the space are given in the Shanti Parv of Mahabharata. At last he attained the transcendental realm. He is known by different names like Aranya, Arunisuta, Vyasaki, and Vyasatmaja. Okay. Kashyap, one of the Prajapatis, the son of Marsi and one of the sons-in-law of Prajapati Daksh. He is the father of the gigantic bird Garuda, who was given elephants and tortoise as eatables. He married 13 daughters of Prajapati Daksh, and their names are Aditi, Diti, Danu, Kastha, Arista, Sursa, Ila, Muni, Krodh, Vasa, Tamra, Surabhi, Sarama, and Timi. He begot many children, both demigods and demons, by those wives. From his first wife Aditi, all the 12 Aditya were born. One of them is Vamana, the incarnation of Godhead. This great sage Kashyapa was also present at the time of Arjuna's birth. He received a presentation of the whole world from uh, Parashuram, and later on he asked Parashuram to go out of the world. His other name is Aristanemi. He lives on the northern side of the universe. Next is Angirsa. He is son of Maharshi Angira and is known as Brihaspati, the priest of demigods. It is said that Dronacharya was his partial incarnation. Sukracharya was the spiritual master of the demons, and Brihaspati challenged him. His son is Kaka, and he delivered the first weapon first to Bharadwaj Muni. He begot 6 sons like the fire god by his wife Chandramasi, one of the reputed star. He could travel in space and therefore he could present himself even in the planets of Brahmalok and Indralok.
He advised the king of heaven, Indra, about conquering the demons. Once he cursed Indra, who thus had to become a hog on the earth and was unwilling to return to heaven. Such is the power of the attraction of illusory energy. Even a hog does not wish to part with his earthly possession in exchange for a heavenly kingdom. He was the religious preceptor of the native of different planets. सुखदेव गोस्वामी और ये दो ऋषियों का जिनका नाम आया है श्लोक में, जी उनका बैकग्राउंड बताया उन्होंने पूरा, हम्म, प्रभुपाद जी ने, हम्म, कि कितने एग्जॉल्टेड थे। बेसिकली सुखदेव गोस्वामी के बारे में, हाँ, जिन्होंने ये भागवतम और महाभारत को रिसाइट किया है। हम्म, नेक्स्ट टेक्स्ट 9। हम्म, तान समेतान महाभागनुप्लभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। Bhishmdev, who was the best amongst the 8 Vasus, received and welcomed all great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to the time and place. Expert religionists knew perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their missions by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climate and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of the time and place. Bhishmdev was one of the 12 great authorities in preaching the cult of devotional service, and therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in the normal healthy condition, but he was quite fit by activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with heartily expressions, and all of them were well received. One can perform one's duty by physical work, by mind, by words, and he knew well how to utilize them in proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. हम्म, भाई यहाँ पर तो एक ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो लास्ट में उन्होंने बताई है कि इवन इफ यू आर फिजिकली अनफिट यू कैन गिव रिस्पेक्ट थ्रू योर माइंड एंड वर्ड्स। हम्म, मतलब ये दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। जो ये लोग ऐसे लोग होते हैं वो अपनी इन फैकल्टीज को कभी नहीं खोते हैं, मतलब देयर माइंड एंड देयर वर्ड्स आर ऑलवेज exalted। ये हम लोग खुद भी जाके सतस्वरूपा महाराज गोस्वामी के पास भी हम लोग, ये मैं तो एटलीस्ट मैंने बड़ा फील किया ये चीज। he is just very very respectful to his visitors and such kind words, which is really yes। सही कह रहा हूँ। Okay. हाँ Then टेक्स्ट 10। हाँ कृष्णां च तत्प्रभावज्ञा आसीनां जगद ईश्वरम् हृदि स्थां पूजायम् आस मायायोपता विग्रहम्। Translation: Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his internal potency. This very Lord was sitting before Bhishmdev, and since Bhishmdev knew of his glories, he worshipped him duly. Purport: The Lord's omnipotency is displayed by his simultaneous presence in every place. He is present always in his eternal abode
Golok, Vrindavan, and still he is present in everyone's heart and even within every invisible atom. When he manifests his eternal transcendental form in the material world, he does so by his internal potency. The external potency or the material energy has nothing to do with his eternal form. All these truths were known to Sri Bhishmdev, who worshipped him accordingly. यहाँ पर अलग से बता रहे हैं कि मैं लॉर्ड श्री कृष्णा की ग्लोरीज कि भाई भीष्म देव को पता है उनकी है मतलब ट्रांसीडेंटल फॉर्म के बारे में ये भी और अकॉर्डिंगली जैसे लास्ट वाले उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने कहा कि भाई भीष्मदेव इज वन ऑफ द 12 ग्रेट अथॉरिटीज इन प्रीचिंग दिस कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो एक्चुअली भीष्मदेव तो मतलब है भी, मतलब ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अब मतलब ये कि पता नहीं मेरे को, यहाँ आई कांट से कर मैं वो महाजन है कर मैं मे बी यस जस्ट लाइक बाली महाराज प्रहलाद महाराज मे बी अभी देखना पड़ेगा। आई एम नॉट सो मच नोइंग मतलब दे या जी पढ़ो नेक्स्ट। जी जी। पांडु पुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागा शैरंधी भेतून भूतेन भूतेन चक्षुषा। Translation. The son of Maharaja Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishmdev congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. When Maharaja Pandu died, his sons were all small children, and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, especially by Bhishmdev. Later on, when the Pandu were grown up, they were cheated by cunning Duryodhana and company and Bhishmadeva. Although he knew that Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of Pandavas for political reasons. At the last stage of his life, when Bhishmdev saw his most exalted grandsons, headed by Maharaja Yudhishthir, sitting very gently at his side, the great warrior grandfather could not check his loving tears, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulation suffered by his most pious grandson. Certainly, he was the most satisfied man because of Yudhishthir's being enthroned in place of Duryodhana, and thus he began to congratulate them. भीष्मदेव जी अपने मतलब वो बता रहे हैं क्या नाम है बचपन में उन लोगों ने उनको पाला था और बाद में क्या नाम है वो बिकॉज ही वॉज नहीं उनको ही कुड नॉट टेक द करेक्ट साइड बट इन द एंड ही वॉज हैप्पी एज वेल एज कि भाई उनके ये लोग विजयी हुए हैं और अब ये मेरे पास आए हैं फॉरगेटिंग देयर पास्ट विद हिम। अच्छा, इसमें एक चीज वो भी है कि आई थिंक ये धृतराष्ट्र नहीं आए हैं बाय द वे, इसमें पूरी लिस्ट में अभी तक हाँ हाँ धृतराष्ट्र का नाम धृतराष्ट्र नहीं का है। नाम नहीं आ रहा। टेक्स्ट 12 अहो कष्ट महो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदन जीवितुम नाहर्थ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युतश्रया। Bhishmdev said, "Oh, what terrible sufferings and what terrible injustice you good souls suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God, and religion." Maharaj Yudhishthir was disturbed due to the great massacre in the battle of Kurukshetra.
Bhishmdev could understand this, and therefore he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhishthir. He was put into difficulty by injustice only, and the battle of Kurukshetra was fought just to counteract this injustice. Therefore, he should not regret the great massacre. He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmanas, the Lord, and the religious principles. As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment. Thus, Bhismdev encouraged Maharaja Yudhishthir to dissipate his despondency. As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly follow the religious principles, one has no cause of despondency. However, trying the circumstances of life. Bhishmdev, as one of the authorities in the line, wanted to impress this pious point upon Pandavas. ये बड़ा अच्छा है कि as long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahman and Vaishnavas, and strictly following religious principles, one has no cause for despondency. Despondency is being in a low spirits, loss of hope or courage, However, trying the circumstances of life are, अब लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अगर आप भगवान के विशेष के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वैष्णवाज ब्राह्मण के संग में हैं, साधु संग में हैं और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको मतलब इवेंचुअली इट विल वर्क आउट. यू हैव नो रीजन फॉर डेस्पोडेंसी, नो रीजन फॉर लो स्पिरिट. एक्चुअली आज ना एक वो मतलब मुझे मुक्ता प्रभु एक और बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि इसी के कंटेक्स्ट में एक लेडी आई. लेडी जो है वो डिवोटी, शी यूज्ड टू चैंट अ लॉट एंड चैंट करके तो शीला प्रभुपाद के पास आई. कहती कि मैं चैंटिंग तो करती हूँ बट आई स्टिल फील यही डिस्पोर्डेंसी, लो स्पिरिट या डिप्रेशन या डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड इज द वर्ड शी यूज. तो शीला प्रभुपाद सेड कि भैया अगर इफ यू आर चैंटिंग, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो then there is no ये disappointment is not allowed. disappointment is not allowed. तो मतलब जबकि आप अगर देखें, और ही पर्सोनिफाइड इट, वो कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद इसी तरह से किया. मतलब अमेरिका, इंडिया से अमेरिका में जर्नी में हार्ट अटैक्स भी हुए, यहाँ किस तरह लटकते छटकते हुए पहुंचे भी. बॉस्टन में कोई रिसीव करने के लिए, न्यूयॉर्क में कोई रिसीव करने के लिए नहीं. 1 साल तक न्यूयॉर्क में स्ट्रगल करते रहे, कोई नहीं था. बट ही डिड नॉट, डेस्पोडेंसी नहीं हुई उनके अंदर, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कि भगवान मुझे ये कहाँ झोंक दिया है. तो ये जो इस तरह, और जो आप सोचिए ना, ये भी जब ये लिख रहे हैं ये वाला कैंटो 1, मतलब आई एम ऑलवेज अमेज्ड कि इस समय इनके पास कुछ नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, बट इनका कितना मतलब फोर्सबली लिखना. एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज फुल्ली इन कॉपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड. इस समय ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और वानप्रस्थ एक तरह से ले लिया था. श्रीला प्रभुपाद ने संन्यास नहीं लिया था. गाइडेड बाय द बोनाफाइड ब्राह्मण एंड वैष्णवास. तो हाँ, ये मतलब जो वहां पे थे वैष्णवास, जो इनके आसपास गॉड ब्रदर्स थे, उनके साथ रह रहे थे. And strictly following religious persons, one has no cause for despondency. However, trying the circumstances of life. लाइफ में तो बहुत ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस थे वहाँ, इवन दिल्ली में और सब में. नेक्स्ट किसका? हाँ, नेक्स्ट पढ़ो तो. 13. संशिथे तीराथे पांडव यथा बला प्राजा वादु युष्मात् कृते बहुन क्लेशन प्राप्त तो कावती मुहु.
Translation: As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great General Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your action. Purport: The sufferings of Kunti Devi are doubly lamented. She suffered greatly because of early widowhood and to get her minor children brought up in the royal family. And when her children were grown up, she continued to suffer because of her son's actions. So her suffering continued. This means that she was destined to suffer by providence, and this one has to tolerate without being disturbed. ये ना यही है. This means that she was destined to suffer by providence, and this one has to tolerate without being disturbed. हम लोगों के ऊपर भी जो सफरिंग आ रही है, दैट इज बाय प्रोविडेंस. तो बट यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट इट. सबकी लाइफ में आती है, लेकिन बाकी लोग तो वो बिविल्डर्ड हैं. जैसे जैसे जो लोग डिवोटी बन जाते हैं, जैसे तो वो उनके लिए फिर ये हो जाता है कि भाई दे लर्न टू टॉलरेट इट, कि भाई भगवान की मर्जी है ये. बिल्कुल. मतलब मजे की बात यह है कि वो मटेरियली भी कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में, yet they think that they can elevate this condition by material efforts. तो अगर आप देखा जाए तो एटलीस्ट इफ यू लर्न टू टॉलरेट यू आर बेटर ऑफ. बिकॉज ये तो पक्की बात है कि अगर हम मटेरियली कोई अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता तो फिर वो कर ही लेता. लोग कैंसर हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है. दे विल हैव टू सफर. ऐसे ही हर एक के केस में सर. बट वो क्या है कि जब वो बॉडीली कंसेप्शन में रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो दे आर वर्स ऑफ एक्चुअली इवन मटेरियली भी. अगर आदमी टॉलरेट करना सीख जाए तो काफी मतलब उसका बहुत अच्छा हो जाएगा. नहीं? बिल्कुल टॉलरेट करना. भाई देखो ना, अगर आप वो तीनों जो मिजरीज हैं, आध्यात्मिक जो अपनी बॉडी माइंड, वो टॉलरेंसेस तीनों डिफीट हो सकती हैं. आध्यात्मिक भी, आधि भौतिक जो दूसरों से इंटरेक्शन से मिलती हैं, और आधिदैविक जो कि मतलब नेचुरल डिजास्टर है. टॉलरेंस इज लाइक द मतलब क्योर फॉर ऑल थ्री. और वो टॉलरेंस ही मैं देखता हूँ कि जितना हम ये करते जा रहे हैं, उससे टॉलरेंस आपका बढ़ता जाता है. यही वो जैसे बीच वाले ताऊ जी भी कह रहे थे लास्ट फ्राइडे को कि भाई अब नेबर्स के साथ नहीं इतना वो फील होता है. टॉलरेंस आपका वही है, क्योंकि ऐसे तो फिर आप सर फोड़ते रहोगे अपनी बॉडी माइंड से, दूसरों के साथ, नहीं तो ये बीमारियों के साथ, नेचुरल डिजास्टर्स के साथ, अगर इफ यू डोंट टॉलरेट. और जी हमको ये लगता है कि जो टॉलरेंस है वरुण, जब विवेक बहुत आपका तेज होगा तभी टॉलरेंस रह पाएगा ना वरुण. बिल्कुल जब बिल्कुल हम मौसी. अंदर की सारी चीजों को समझ रहे हों और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हों. डिसर्निंग तो तभी तो मतलब आप पढ़ पा रहे हैं, यही दैट इटसेल्फ इज ए साइन ऑफ आपके विवेक का और डिसर्निंग पावर का. जी. यस, यू आर वेरी राइट. विवेक बहुत जरूरी है. और यदि एक चीज और भी है कि जब हम थोड़ा सा धैर्य रख के चीजों को देखते हैं, तो जो सर्कमस्टांसेस हैं हम उनके ऊपर आ जाते हैं. इसमें दो चीजें मैंने प्रैक्टिकली देखी यही, जैसे कोई भी सिचुएशन आई है तो पहले वो आपको दबाने की कोशिश करेगी. जब आपका विवेक तेज हो जाएगा तो आप उस चीज को दबा देंगे. हैंडल तो करना ही है, चाहे आप रो के हैंडल करिए चाहे हंस के हैंडल करिए, तो बेटर है कि हंस के करिए. ये नेक्स्ट पढ़े. हाँ, यस. जी. सर्वं कालकृतं मन्ये भगवतां च यद प्रियं सपालो यदशे लोको वायुरिव घनावली. ट्रांसलेशन: In my opinion, this is all due to the inevitable time under whose control everyone is in every planet is carried, just as the clouds are carried by wind. Purport: There is control by time all over the space within the universe, as there is control by time all over the planets. All the big
gigantic planets, including the sun, are being controlled by the force of air, as the clouds are carried by the force of air. Similarly, the inevitable call or time controls even the action of the air and other elements. Everything, therefore, is controlled by the supreme call, a forceful representative of Lord within the material world. Thus, Yudhishthira should not be sorry for the inconceivable action of time. Everyone has to bear the action and reactions of time as long as one is within the conditions of the material world. Yudhishthir should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequences. Even the most pious has to suffer the conditions of material nature. But a pious man is faithful to the Lord, for he is guided by the bona fide Brahmana and Vaishnava, following the religious principles. These three guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. Even the great controller of the universe, Brahmaji, is also under the control of that time. Therefore, one should not grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principles. हाँ वो है, मतलब कि मुझे तो ये बड़ा वो लगा पॉजिटिव, जैसे इसमें कहा ना, इवन द मोस्ट पायस हैज टू सफर द कंडीशंस ऑफ मटेरियल नेचर, बट अ पायस मैन इज फेथफुल टू द लॉर्ड फॉर ही इज गाइडेड बाय द बोनाफाइड ब्राह्मण एंड वैष्णव फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल। मतलब कि इवन जो पांडवों, और सही भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पांडव जो थे वो देवर द मोस्ट पायस उस टाइम में, बट उनको भी ये मटेरियल इश्यूज, मटेरियल सफरिंग उनको झेलनी पड़ी, सारे पांडवों को, द्रौपदी जी को भी, द्रौपदी माता को भी। तो मतलब कि एक्चुअली कभी कभी हम लोगों को जैसे अपने लगता है ना कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भाई हमने कोई ऐसा खराब काम नहीं किया है, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो। ये तो यही काल का, ये मुझे बहुत सही लगा कि भाई दैट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल टाइम है ये। In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried. ब्रह्मा जी तक भी, जो कि उनसे ज्यादा तो पाया सब क्या होगा कोई, लेकिन बट ही इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द इटर्नल टाइम। उनकी भी डेथ है, उनकी भी एज है, उनकी भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है, बट है उनकी भी एज। तो मेरे को तो काफी वो लगा कि मतलब ऐसे कई बार आदमी को ये लगता है ना कि भाई हम इतने पायस नहीं होंगे तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो भी है, बट सबके साथ ही हो रहा है ये। काल की नियति जो है ना, बड़ा अच्छा यहाँ पे इसमें श्लोक में लेके आया है कि भाई हम्म, काल जो है, अच्छा वो भगवान भी है, काल जो है भगवान है, तो वो डिटरमिन कर रहे हैं आपका हर चीज, आपकी सफरिंग्स, आपकी ये सब, एवरीथिंग इज डिटरमिन। तो फिर उससे मतलब यू यू हैव टू, सबसे अच्छा है कि हम उसकी एक्सेप्टेंस, और कि भगवान का ये वो है, ये उनका निर्णय है कि इस तरह का हमको मिल रहा है, मतलब हैप्पीनेस एंड सफरिंग बोथ वी आर गेटिंग। नारद मुनि का भी यही हुआ, उनकी मदर को सांप ने डस लिया 5 साल की उम्र में। तो लाइक दैट वो काल की गति है कि क्रम उनकी माँ की मृत्यु हो गई जब when he was such a small child। तो ये सभी की लाइफ में ये होना ही होना है। तो इसके अंदर में यहाँ पर यही बता रहे हैं हम लोग, कई सारे प्रिंसिपल्स पीछे भी लेके आए हैं अबाउट टॉलरेटिंग सच कैलेमिटीज। या एक्चुअली एक जी। चीज से और और भी ये जी, निकल यहाँ के पे आती उन्होंने है इसका कि सोल्यूशन भी बता दिया ना वरुण, जो हम्म इनएविटेबल टाइम बता दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज आनी है, आपको सफर करना है, और कैसे इसको फेस करना है उसका उन्होंने सोल्यूशन बता दिया। भाई भगवान में फेथ रखिए, और ये फेथ समय भी रखिए। टल जाएगा, कट जाएगा, और अपना पॉजिटिवली चीजों को वो करिए। यही मेरे को उस सेंस में मुझे लग रहा था कि ये पढ़ने का ये सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है। एक तो आपको बड़ा सोबर रखेगा ये चीज, हम्म बहुत ही कि भाई आपको बिल्कुल आपका ग्राउंडिंग रखेगा कि भाई आप धरती पे रहें, आपके पैर, हम्म ये नहीं कि आप बिल्कुल हवा में कि भाई मैं तो मटेरियली इतना अच्छा हूं तो मतलब मेरे पास पैसा है, ये है, तो मतलब आपने, एक तो पहली बात आपको धरती पे रखेगा ये चीज, और दूसरी चीज आपको मतलब उससे डील करने का टॉलरेंस, जो हम लोग को कि टॉलरेंस हम लोग को बिल्ड कर रहा है, स्पिरिचुअल टॉलरेंस भी इसको पढ़ पढ़ के बिल्ड हो रहा है।
कि भाई हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ है। जो हम्म, जैसा आपने कहा ना कि भाई फेथ बिल्ड कर रहा है हमारा इन लॉर्ड कृष्णा, कि हम्म, भाई चाहे कुछ भी हो लेकिन हम पढ़ने आ रहे हैं। तो हम्म, यस, ये बेनिफिट मुझे बड़ा एकदम से हम्म, स्ट्राइक किया। जैसे बाकी लोगों में, नॉन डिवोटीज और डिवोटीज में और इन एक्टिविटीज में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा हम्म, difference। ये डिवोटीज जो बिल्कुल। हैं वो भगवान के उसमें लगे हुए हैं। हम्म, हाँ, तुमने ये बड़ा अच्छा पकड़ लिया इसके अंदर में कि भाई ये आदमी को बिल्डर नहीं होना है जब मुसीबतें आएंगी। अगर ये सब हम्म, पता होगा कि नाम है कि भाई ये तो काल की नियति है, और हम्म, उसको अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना है। हम्म, विद अपने एक तरह से अगर हमारे हम लोग के सेंस में देखें तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज करते जाएंगे। हम्म, ड्यूटीज करते जाएंगे कि नाम है, ये नहीं कि रोने धोने में ही अपना मतलब लगे रहे उसके बाद। हम्म, यू हैव टू कैरी ऑन योर ड्यूटीज, हम्म, एंड भगवान को बिना भूले हुए। बिल्कुल। है ना, यहाँ पर ये इन्होंने बिल्कुल अच्छे से बताया है कि ये तीनों प्रिंसिपल्स, है ना। जी। हम्म, Therefore, one should not be grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principles. काल की गति से मतलब उससे लड़ने का क्रम है, कोई स्कोप नहीं हम्म, है ना। जी। उसको हम्म, तुमने जो कहा है क्रम है, वही है यहाँ पर कि क्योंकि काल तो आएगा ही आएगा, वो उसको हम्म, आप नहीं रोक पाएंगे। और हम्म, वैसे ऐसे टाइम में आपको अपनी रिलीजियस ड्यूटी, और हम लोग के केस में अपनी जो नित्य कर्म है वो करते ही रहना है। हम्म, जो भी है, आप कॉलेज जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, या आप जॉब कर रहे हैं, या जो भी है वो करते रहना है, बिल्कुल उसी उसी परवर के साथ में, रिमेम्बरिंग कि भाई ये सुप्रीम लॉर्ड के लिए हम ये मतलब यू आर डूइंग दिस। और उनके उनसे वो ईर्ष्या नहीं करनी कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्यों आई, वाई आई एम सफरिंग लाइक दिस, हम्म, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा है, इसमें इस श्लोक जी। में आया परपोर्ट में। हम्म, ठीक है, फिर हम करते जी। हैं। हम्म, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।